ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्माभिः एतावता कारकप्रकरणस्य सम्यक्तया अध्ययनं कृतं। कर्ताकारकं कर्मकारकं करण संप्रदान अपादान and अधिकरण we have elaborately seen, and various uses of prathama dvitiya tritiya chaturthi panchami and saptami vibhakti we have studied. Today we are going to say saptami shashti vibhakti. Regarding the shashti vibhakti I will show some prayogas. Is it visible to everyone? Okay. So mainly this vibhakti does not have direct connection with kriya pada. That's why this particularly shashti vibhakti does not come under in karaka prakarana, right? So it is not useful for karaka prakarana directly, but it is useful to show connection or relation between things. For example, swami स्व स्वामी संबंध, गुरु शिष्य संबंध, पिता पुत्र संबंध, गुण गुणी संबंध, अवयवी संबंध. देर आर वेरियस संबंध, जाति व्यक्ति संबंध. टू शो दिस काइंड ऑफ संबंध वी यूज षष्ठी विभक्ति. So main purpose is to show relation between things. That's it. For example, एतत् मम पुस्तकम् अस्ति. एतत् मम पुस्तकम् अस्ति. Now I am becoming owner of this book. एतत् मम पुस्तकम् अस्ति. It belongs to me. There is a connection between book and me. So to show that relation, to show that connection, we should use षष्ठी विभक्ति. एतत् पुस्तकं मम अस्ति. तत् तस्य पितुः गृहम् अस्ति. तस्य गृहम् अस्ति अथवा तस्य पितुः गृहम् अस्ति. So that गृहम् belongs to pita, his pita, and that particular person belongs to his pita, right? Tasya pita, shashti vibhakti tasya. There is also shashti. And pituhu gruham, there is a connection between swami sambandha. He becomes swami of gruham. That's why the owner of house is known as gruha swami. Swaswami sambandha, right? And another sambandha is pita putra sambandha. Pita putra sambandha. To show that connection also, relation also, we use tasya pita, pituhu gruham. Both way I have formed the sentence. If you want to make shashti here, there would be pita putra sambandha, and gruham and that owner, there is a swaswami bhava sambandha. Okay. एतत् तव कारयानम् अस्ति किम्? एतत् कारयानं तव अस्ति किम् इति वक्तुं शक्यते, राइट? संबंध. सीता रामस्य भार्या आसीत् अथवा अस्ति. सीता रामस्य भार्या अस्ति. देयर इज अ कनेक्शन, राइट? रिलेशन. मुकुंदस्य अम्बा. देयर वाज अ फेमस गीतम. Somehow I had taught you, I guess, no? Few days back, I guess. मुकुंदस्य अम्बा. अम्बायाः जननी. जनन्याः पुत्री. पुत्र्याः मित्रं. मित्रस्य शुनकः. शुनकस्य पुच्छः काशीं गच्छति. मृदुल मुकुंदः काशीं गच्छति. It's famous in Sanskrit Bharati. To make shashti, to teach shashti vibhakti, they always use this geetam, because all akaranta word, ikaranta word,
नपुंसकलिंग शब्द, आकारांत शब्द, you will find Shashti Vibhakti of all these forms, right? Any word ending with akara, it will be declined like Mukundasya. Any word which is ends with a, it will be declined like Amba Ambayaha. इकारंत जननी जनन्याः, पुत्री पुत्र्याः. नपुंसकलिंग शब्द मित्रम मित्रस्य, शुनकः शुनकस्य, like that. So now by using swaswami bhava sambandha or any another relation, I have just put swaswami bhava sambandha, but there are various connection I have already told you. Okay. Now वाक्यानि रचनीयानि. वदन्तु, वाक्यानि वदन्तु. एकैकं वाक्यं निर्मातु. दशरथः रामस्य पिता आसीत्. दशरथः रामस्य पिता आसीत्. समीचीनम्. द्रोणः अर्जुनस्य गुरुः अस्ति. गुरुः अस्ति. द्रोणः अर्जुनस्य गुरुः अस्ति. समीचीनम्. हनुमान् रामस्य दूतः अस्ति. दूतः अस्ति. समीचीनम्. मैसेंजर. Fine. Okay. Now next point. There are some words like upari, adaha, vamatah, dakshinatah, prushtatah, puratah. Along with those words or avyas, we use Shashti Vibhakti. Upari means above, adaha means below. Puratah athva agre athva samaksham means in front of. Like prushtatah means behind. Dakshinatah at right side. Vamatah left side. And krite, even with krite shabda we use Shashti Vibhakti. For example, let's see. एकम् उदाहरणम्. उपरि, कस्य उपरि काकः अस्ति? गृहस्य उपरि काकः उपविष्टः अस्ति. Right? Upari. Along with that upari shabda, you have to use Shashti. So grihasya upari, yasya upari, tasya, Shashti Vibhakti. Puratah means in front of. Mandirasya puratah अथवा मंदिरस्य अग्रे किम अस्ति? वाटिका अस्ति. तस्य पृष्ठतः behind जलाशयः अस्ति. कस्य? मंदिरस्य वक्तुं शक्यते, विद्यालयस्य वक्तुं शक्यते, whatever you can. विद्यालयस्य दक्षिणतः at right side क्रीडांगणम् अस्ति. Along with दक्षिणतः शब्द षष्ठी विभक्ति we use. अधः, वामतः also similarly. रामस्य वामतः सीता अस्ति. अधः, अधः below. भूम्याः अधः किम् अस्ति? जलम् अस्ति इति वक्तव्यम्. कृते, along with कृते, whenever we use कृते शब्द, that time we have to use Shashti Vibhakti. Ramasya krite, balakasya krite, mama krite, tava krite, tasya krite, tasyaha krite, for her, for him, for you, etc. etc. So tasya krite maya kim na kritam, maya sarvam kritam iti artha. Right? Now by using upari, adaha, prushtatah, puratah, dakshinatah, vamatah, krite, along with these words you have to use Shashti Vibhakti. So try it. If there are some changes, we will correct it one by one. मम गृहस्य पुरतः behind पृष्ठतः एकः तडागम् अस्ति. अस्ति. What is that? तडागः, कासारः. तडागः अस्ति. समीचीनम्. अन्यापि वदन्तु. मम गृहस्य पुरतः
वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति समीचीनम्। अर्जुनस्य रथस्य उपरि ध्वजः अस्ति। हाँ, ध्वजः अस्ति। ध्वजः अस्ति समीचीनम्। मम मातुः दक्षिणकपोले गण्डतरङ्गः अस्ति। What? गण्ड? Dimple. Oh, Dimple in the right cheek. nice. समीचीनम्। पुनः एकवारं वदतु। मम मातुः दक्षिणकपोले एक गण्डतरङ्गः आसीत् या अस्ति। समीचीनं। नूतनः शब्दः मम कृते। अन्यापि वदन्तु। विश्वस्य उपरि महाकाशः अस्ति। विश्वस्य उपरि महाकाशः अस्ति। समीचीनम्। कृते दक्षिणतः वामतः इत्येषां शब्दानाम् अपि प्रयोगं कुर्वन्तु। We can say हिमालयस्य सीतायाः कृते हनुमान् लङ्कां गच्छति। सीतायाः कृते हनुमान् लङ्कां गच्छति। समीचीनम्। એટલે हिमालयस्य शिखरे केदारनाथाय शिवः अस्ति। केदारनाथे शिवः अस्ति। शिवः अस्ति। समीचीनम्। सर्वैः एकैकं वाक्यं वक्तव्यं। वदन्तु। यदि न वदन्ति चेत् अहम् अग्रे सरामि। वृक्षः वृक्षः वृक्षस्य उपरि फलं सन्ति, फलानि सन्ति। वृक्षाणाम् अथवा वृक्षस्य उपरि सिंगुलर आल्सो प्लूरल वृक्षाणां उपरि फलानि बहूनि फलानि भवन्ति। समीचीनम्। अध्ययनस्य कृते छात्राः बहु कष्टानि सह्यन्ति। अध्ययनस्य कृते छात्रः बहु कष्टम् अनुभवति। पुत्र्याः कृते माता भोजनं पचति। पुत्र्याः कृते माता भोजनं, कुटुम्बस्य कृते परिवारस्य कृते अपि माता पचति। समीचीनम्। अन्य वक्तुम् इच्छन्ति वा? न वदन्ति चेत् अहम् अग्रे सरामि। पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, उपरि, अधः इत्येषां प्रयोगं कृत्वा एकमेकं ये नूतनाः ते अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, एतत् षष्ठीविभक्तेः प्रयोगः बहु सरलः इति कृत्वा अग्रे सरामि। अग्रे कर्मणि षष्ठी इति कृत्वा एकं सूत्रं वर्तते। तस्य सूत्रस्य आधारेण तत्र क्रियापदम् अवगन्तव्यं। क्रियापदं तत्र क्रियापदे अपि प्रकारद्वयं, सकर्मकक्रियापद, अकर्मकक्रियापद इति प्रकारद्वयं। सकर्मक नाम किं? ट्रान्सिटिव् वर्ब् विच कम्स अलोंग विथ कर्म इज नोन एज सकर्मक। शब्देन एव ज्ञायते खलु, स कर्म, कर्मणा सह विद्यते इति सकर्म। अकर्मक नाम किं? यस्मिन् कर्मस्य आवश्यकता न भवति अथवा यस्मिन् कर्म न भवति तद अकर्मक, intransitive verb. So when we use sakarmaka kriyapad, transitive verb, that transitive verb, if we want to use into vibhajya प्रयोगे सकर्मक क्रियापद मध्ये यत् कर्मपदं वर्तते तस्य योगे यत् कर्मपदम् आयाति तस्य कर्मपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति। बहु सरलम् अस्ति, भवन्तः एकवारम् उदाहरणेन अवगच्छन्तु। पिता धनं गणयति। अस्मिन् वाक्ये कर्ता अस्ति पिता, यतोहि गणनक्रियायाः सह
गणनां सः करोति इति कृत्वा सः कर्ता। धनम् इति कर्मपदं, गणयति इति क्रियापदम्। अस्मिन्नेव वाक्ये यत् कर्मपदं भवति तस्य कर्मणि षष्ठी विभक्ति करणीया। कदा? विभज्यप्रयोगे। विभज्यप्रयोगः नाम किं? यदि गणयति इति क्रियापदं तत् विभाज्य अथवा तस्य विभागं कृत्वा यदि पठामः तत् क्रियापदं तस्य विभज्यप्रयोगे इति अर्थः। उदाहरणं किं? गणयति गणनां करोति, पठति इत्यस्य विभज्यप्रयोगः कः भवितुम् अर्हति? कथं? पठनं पठनं करोति ल्यूट् लकार ल्यूट् प्रत्यय यू हैव टू यूज। पठनं, भजनं, भोजनं, करणं, दर्शनं, श्रवणं, मननम् इत्यादिकं। These are ल्यूट् प्रत्ययant form. So everywhere you can use like that. Any kriya. Sorry, Avinash, I am not able to understand vibhajya prayoga. Can you explain in English a little bit? So now understand, ganayati is transitive verb. Sakarmak kriyapada. Sakarmak kriyapada means what? It will come along with karma. So now there is a kind of usage of this kind of sentence, like vibhajya prayoga means what? If you are not able to remember all the form of ganayati, that time to make it simple, they have come up with vibhajya prayoga. Means what? If you only memorize karoti dhatu and if you don't memorize any another dhatu, still you can use all kinds of dhatus. Like ganayati, if you don't know lakara, what becomes lang lakara, any another lakara, still you will do vibhajya prayoga. Means you will separate that into two parts. Gananam karoti, gananam karoti, that way. Like pita, dhanasya gananam karoti, ganayati gananam karoti, patati pathanam karoti, pashyati darshanam karoti. Then that kind of vibhajya prayoga you can make of all kriya padas. So you can ask me any kriya pada, I will do vibhajya prayoga of that. I will try to make it into vibhajya prayoga. Yes. Is there any doubt? गृह्णाति का क्या होगा? Okay, okay. Thank you. ग्रहणं करोति, गृह्णाति ग्रहणं करोति। ओके। वदन्तु एकमेकं क्रियापदं वदन्तु, तस्य विभज्यप्रयोगं प्रथमतया अवगच्छामः, ततः वाक्यप्रयोगं कुर्मः। जिघ्रति घ्राणम् अथवा घ्राणम् इति भवति। घ्राणं करोति, जिघ्रणं करोति, जिघ्रणं करोति खलु घ्राणं। पाऊस होतोय का? वदन्तु। धारयति धारणं करोति। हाँ, धारणं करोति। जिघ्रति, I have to find out. जिघ्रति घ्राणं भवति वा? जिघ्रणं करोति चलति महोदय? घ्राणं I haven't heard that prayoga, but I have to find out. I will write down. ओके। चिन्तयति चिन्तनं। ठीक है, अभी इनका है ना वाक्य में प्रयोग देखते हैं कैसे होता है। तो अभी मेन सेंटेंस आप कैसा बनाएंगे? कर्ता, कर्म और क्रियापद के साथ। दैट सेम सेंटेंस इफ वी आर यूजिंग इनटू और मेकिंग इनटू विभज्य प्रयोग, so we have to put karma padam into shashti. Like dhanam, it was karma padam, it was in dvitiya, but while making into vibhajya prayoga, that karma padam will go into shashti vibhakti. Now make another sentence. Can we make it like that? Mata atithinam swagatam karoti. Swagati karoti, swagatam karoti. Actually it is already what vibhajya prayoga. It is vibhajya prayoganta rupam. Swagati. छात्राः पाठं पाठयन्ति। छात्राः पाठं पाठयन्ति, पाठान् पाठयन्ति।
Now same sentence would be made into vibhajya prayoga. For example, chhatraha will remain as it is. What was the karma padam in that sentence? पठन पाठ. बहुवचन षष्ठी बहुवचन अथवा षष्ठी एक वचन यू कैन से. पाठम पाठस्य, पाठान पाठानाम. Either you singular or plural, whatever you want to use, you can use. वदन्तु. छात्राः पाठस्य पाठनं कुर्वन्ति. That would be one way. Another way. छात्राः पाठानां पाठनं कुर्वन्ति. वदन्तु. माता भोजनं पाचयति पचति. पचति ओके पचनं करोति पाचनं करोति यदा विभज्य प्रयोगः क्रियते तदा कर्मपदस्य षष्ठी विभक्ति करणीया. माता भोजनस्य इति. पाचयति पाचनं करोति, पचति पचनं करोति. आकाशे आकाशात् no I don't know what I'm saying. I was going to say the rain falls, but there is no shashti vibhakti there. पतति is akarma kriya pada. Okay. Transit. Sakarmaka kriya. सूर्यस्य किरणं भूमिं पतति सूर्यस्य किरणम् आगच्छति आगमनं. but there is no विभज्य प्रयोग there. भूमौ आगच्छन्ति अथवा भूमिं आगच्छन्ति. That way sentence we would make. And vibhajya it would be सूर्यकिरणानाम् आगमनं भूमौ भवति अथवा भूमिं. Or we can say सूर्यस्य किरणं भूमि प्रकाशनं करोति. प्रकाशति क्रियापद if you use सूर्यस्य किरणं प्रकाशते. सूर्यकिरणस्य प्रकाशते. ओके. लज्जा बिभति बिभनं करोति. प्रकाशते धातु इज आकर्मक धातु again okay. जागरणं वृद्धि क्षय भय जीवनं शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम. दीप्ति इज प्रकाशार्थम, so it is अकर्मक. Samartha, you were asking something. Can we do the thing on gachati? Huh? Can we do this vibhajya prayoga on gachati? That is again, yeah, we can. Ramasya gamanam bhavati. I had thought of a sentence. Your voice is not audible. Another. I will put kriyapada. Aham chayam na pibami. अहं चायस्य पिबनं न करोमि के करोति पानम. अहं पानं न करोमि पानं भवति. अहं चायस्य पानं न करोमि. लेखकः पुस्तकं लिखति. लेखकः पुस्तकस्य लेखनं करोति. These are some sentences. Now रजकः वस्त्रं क्षालयति क्षालनं करोति वस्त्रस्य क्षालनं करोति. षष्ठी प्रक्षालयति प्रक्षालनं करोति. Simple, make simple sentence, then vibhajya prayogi. प्रक्षालयति. रजकः वृक्षं, sorry, not वृक्षं, वस्त्रं प्रक्षालयति. रजकः वस्त्रस्य प्रक्षालनं करोति. That is another. देवस्य पूजनं करोति.
Simple sentence, then vibhajya prayoga. Nice. शिक्षकः छात्रस्य नहीं होगा ना Simple. Just make simple sentence, then you can use vibhajya prayoganta rupam. ताडयति शिक्षकः ताडयति कं ताडयति बालकं शिष्यं ताडयति. You can make vibhajya prayoga. शिक्षकः बालकस्य ताडयति बरोबर है महोदय ताडनं करोति हाँ, बालकस्य ताडनं करोति. शिक्षकः बालकं ताडयति शिक्षक बालकस्य ताडनं करोति. There is a अर्थ बराबर नहीं लगता ना मगर उसका बालकस्य एव अर्थः समान एव. पूजकः देवं पूजयति. हाँ पूजकः देवस्य पूजां करोति पूजनं करोति. It is same. आरक्षकः चोरां ताडयति हाँ, चोरस्य ताडनं करोति चोरं ताडयति आरक्षकः चोरस्य ताडनं करोति ताडनं करोति. Can I say Krishnasya kanthe malam dharayami. Dharayami. I want to put garland on Krishna's kant. कृष्णस्य कण्ठे. Again, it becomes akarmaka dhatu. न अकर्मक. It is not अकर्मक. कृष्णस्य कण्ठे. कण्ठ is आधार. कृष्णस्य कण्ठे Okay. मालां धारयामि. माला becomes कर्मपद. So कृष्णस्य कण्ठे मालां धारयामि. कृष्णस्य कण्ठे मालायाः धारणं कारयामि. Karayami. Okay. कारयामि, it is nijanta form. So even in vibhajya prayoga, karayati becomes nijanta. I make. Right? Okay. Karoti. It would be karayati into nijanta. Gayati, gayanam karoti, ganam karoti. गायिका गायनं करोति गायिका गानस्य गायनं करोति हाँ, श्लोकः गायकः श्लोकं गायति. गायकः श्लोकस्य गानं करोति. Karoti. गीतस्य गायनं करोति असो गायनं करोति. नेक्स्ट. प्रज्वलयति अहं दीपस्य प्रज्वलं करोमि पुनः वदतु. What is prajwalayati? To light up. Light up. Lit up. अहं दीपस्य प्रज्वलयति करोति Aham, if you use aham, you have to put vadami, pathami, mi pratyay, right? Aham prajwalayami. Aham deepam prajwalayami. Aham deepasya prajwalanam karomi. Nice. वीडियो का आवाज ठीक से भी नहीं आ रहा है हा सर तुमचं जरा काहीतरी हे मागे आवाज हाँ एक एक शब्द जातोय एक एक शब्द आणि सर दिसत पण नाहीये दिसतंय मीही न श्रूयते वा? आम्हाला दिसतोय व्यवस्थित. हा. मला दिसतंय हो. मागे आवाज भजनं करोति. एकमेकं वाक्यं वदन्तु. वदन्तु. भजति. कः कं भजति? भक्तः देवं भजति भक्तः देवं भजति. भक्तः देवस्य भजनं करोति. Adhite. So see, adhite, parikshate, these are not familiar shabda. But if we make vibhajya prayoga of that, it would be simple, right? Adhite, if you decline, it becomes very difficult to decline for declension.
but अध्ययनं करोति will be चरतं करोति सुकृतं कुर्वन्ति. सा अध्यायम् अधीते सा अध्यायस्य अध्ययनं करोति बहु सम्यक्. अहं वेदं पठामि अहं वेदस्य अध्ययनं करोमि पठति, if you are using पठति धातु, then विभज्य प्रयोगे अपि पठति, पठनं should come. अहं वेदं अहं वेद अधीते That would be अधीते is not correct अहं संस्कृतम् अधीते अहं वेदस्य पठन् अध्ययनं अध्ययनं करोमि the sentence would be like this: अहं वेदम् अधीये, अहं वेदस्य अध्ययनं करोमि. अहं वेदं पठामि, अहं वेदस्य पठनं करोमि. अहं संस्कृतं पठामि, अहं संस्कृतस्य पठनं करोमि. That way. we cannot say vedasya अध्ययनं करोमि Yeah, you can. So see, there is no restrictions to make sentences. But if you are using particularly like pathati dhatu and then you are making vibhajya of pathati, then pathanam karoti would be correct. But while making only one sentence, it's fine if it conveys message that, oh, aham vedasya adhyanam karomi. They are not going to ask you whether you are using pathati dhatu or adhite dhatu, because it is not expected, right? You are going to say aham vedam pathami, or you are going to say aham vedasya pathanam karomi. Anyway, both are correct only. So now few more practice. Aham pustakam patami. Vibhajya prayoga of this. अहं पुस्तकस्य पठनं करोमि Aham pustakasya pathanam karomi. सः दुर्गायाः पूजनं पूजनं करोति Saha दुर्गायाः पूजनं पूजनं ambayaha, durgayaha. Very nice. Ramah ravanam kunti रावणस्य हननं करोति करोति करो. समीचीनं. माता देवगृहम् अलङ्करोति. माता देवगृहस्य अलङ्कारं करोति अलङ्करणं करोति वयं व्याकरणम् अधीतवन्तः. Now you have to use past tense of karoti क्रियापद. कृतवान्, कृतवन्तौ, कृतवन्तः, like that. वयं व्याकरणस्य अध्ययनं कृतवन्तः वयं कृतवन्तः. वयं व्याकरणस्य अध्ययनं कृतवन्तः कृष्णः वृन्दावनं त्यजति. कृष्णः वृन्दावनस्य वृन्दावनस्य त्यागं त्यजनं करोति त्यागम् इति अपि कदाचित् वदन्ति, किन्तु त्यजनम् इति वक्तव्यम्. ओके न त्यागम् अस्तु. सम् रिलेशन् सरलं वर्तते. रामः रामस्य पत्नी सीता, रामस्य भ्राता माता लक्ष्मणः, रामस्य भक्तः हनुमान्, रामस्य शत्रुः रावण, रामस्य कौसल्य Now you have to do विपरीत वे. सीतायाः पितायाः पति राम पतिः रामः. Next, कौसल्याः पुत्रः राम what music? कौसल्याः रमायाः कौसल्यायाः कौसल्यायाः पुत्रः रामः रामः. लक्ष्मणस्य भ्राता रामः लक्ष्मणस्य भ्राता रामः. इतोपि दशरथस्य पुत्र रामः रावणस्य शत्रुः रामः
दशरथस्य स्नुषा सीता. We can say Hanumataha Hanumatah. स्वामी हनुमते स्वामी रामः हनुमते Hanumatah Swami Ramah. स्वामी रामो मत रामचंद्रः स्वामी रामः समीचीनम्. इतोपि But is Hanumatah correct? Hanumatah correct? करेक्ट. स्वामी राजा राम समीचीनम्. Yeah, I will do, and I am going to teach karmani, kartari and bhave prayoga for a few minutes. So let's do a summary of Shakti. It is very simple. Whenever we show some relation and connection of things, like Dasarathasya putra, there is a sambandha putra, pita putra sambandha. Then there are some words puratah, prushtatah, vamatah, dakshinatah, adah, upari, like dakshinatah, vamatah, agre, कृते बालकस्य कृते अथवा कर्मणि षष्ठी. These are some points that you remember. पुरतः, पृष्ठतः, उपरि, अधः, दक्षिणतः, वामतः. Very simple. Then स्य कृते, whenever we use कृते शब्द, we have to use shakti vibhakti. रामस्य कृते I only use स्यः, but you can use बालिकायाः कृते. So shakti use that, remember. Okay. कर्मणि षष्ठी means whenever we make vibhajya prayoganta vakya sentence, that time karma padam will be put into shashti. Ramam pashyami aham ramasya darshanam karomi. Now these are some examples. Mandirasya puratah pushpavatika asti, vidyalayasya पृष्ठतः नदी वहति, वृक्षस्य उपरि, मम गृहस्य अधः, विद्यालयस्य दक्षिणतः, रामस्य वामतः, etc. etc. This was very simple, so no need to focus on need to spend. You remember I had explained regarding 1 to 1, the concept of 1 to 1. Means what? Kartrupadam will be put into Prathama, Karma Padam will come under Dvitiya Vibhakti, and Kriya Pada will follow. Karta will be followed by Kriya Pada. For example, same thing, Kartrupada Pradhanah Prayogah, Kartari Prayogah. Means what? In Kartari Prayoga, Karta is predominant. That's why it is known as Kartari Prayoga. If you decline Kartru Shabda, Saptami Vibhakti will be Kartari. Means what? Karta Visheshattvena Vidyate Yasmin Prayoge, Saha Prayogah Kartari Prayoga. So karta will be in prathama vibhakti, karma will be dvitiya, and kartruvat kriya padam bhavati. Kartruvat kriya padam bhavati means what? If जैसे क्रिया karta is in prathama purusha, kriya pada also will be in prathama purusha. If karta is in singular, kriya pada also will be in singular form. That is the meaning of kartruvat kriya padam. Kartruvat, whenever we say vat means you have to follow Purusha and Vachana. And laterly, when we will study Pratyaj, etc., their Linga Vichara also we have to do. Shishyaha Grantham Patati. In this sentence, Shishyaha is Kartrupadam, Grantham is Karmapadam, and Patati is Kriyapadam. So now Patati Kriyapada will change according to Shishya. If there are many Shishyas, we will say पठन्ति Pathanti. If there are two Shishyas, we will say पठतः Pathatah. Right? So that was simple. Kartari Prayoga you have already studied and understood. Now let me see Karmani Prayoga. Karmani Prayoga, so 3, 1, 1 means what? Here Karmani Shabda giving the meaning of that in that Prayoga, in Karmani Prayoga, Karma will be predominant, Muksham predominant. यस्मिन् प्रयोगे कर्म प्रधानतया कार्यं करोति अथवा प्रधानं भवति सः प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः. Again, here sequence is going to change. 3, 1, 1 means what? Kartrupadam will come under Tritiya Vibhakti. Karma Padam will be put into Prathama, and Karmavat Kriya Padam Bhavati. Karmavat Kriya Padam Bhavati means what? Again, same thing. If
karma padam comes under prathama purusha, kriya pada also will be coming under prathama purusha only. If karma pada is in plural, kriya pada also will be put into plural vachananta form. For example, let's see same example I am just putting here by changing into कर्मणि. शिष्येन यन्त ग्रंथः प्रथमांत. Now grantha is in any noun you take, any noun, it always come under prathama purusha. And apart from this, tvam, whenever tvam, yuam, yuyam comes, it comes into second person, dvitiya, tvamadhyaya purusha we say. And aham, avam, vayam always comes under Kama Purusha. So, mainly in Karmani Prayoga, what you are going to find, you will find only the Kama Purusha. And sometimes, rarely you will see Madhyama Purusha and Uttam Purusha. That's how this Prayoga becomes very simple. Shishyena Grantaha Pathyate. If there are many Granthas, then how it will change? ग्रन्थाः ग्रन्थाः पठ्यन्ते. Pathyante. So pathyate, pathyate, pathyante, these forms you have to remember. That's it. Grantah pathyate shishyena granthau pathyate shishyena grantaha pathyante. Here karta doesn't matter. Karta would be singular or plural. Whatever you do, it doesn't depend upon anything. Right? Same sentence. Karmani prayoga is done. Now let's move to bhave prayoga. I don't know how to, what English word can be used for bhave prayoga, I don't know, but let's say how it is used in bhave prayoga means what? Again, it is saptami vibhakti, right? Bhave, bhava shabda, if you define that word, bhave, rame would be seventh. Bhava pradhanah prayogah iti bhave prayoga. Yasmin bhavah pradhanataya bhavati. उदाहरणं पश्यामः किन्तु अस्य स्ट्रक्चर एवं अस्ति 3-1. 3-1 means what? Karta, there will be karta in that sentence and there would be basically kriya pada, no karma. There will not be any karma. That is the difference between karmani prayoga and bhave prayoga. Karmani prayoga means what? You will find karma padam in karmani prayoga. It is same, but if you are using akarmaka kriya pada, that time bhave prayoga is done. Let's see one sentence. कारिका लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातुगणम तम अकर्मकम आहु. If dhatu comes in the meaning of lajja, like lajjate, there is a dhatu. Dhurati is another dhatu. It is lajjarthaka dhatu. Whenever you use lajjarthaka dhatu, you are going to use into either kartari prayoga or bhave prayoga. Lajjate. It is kartari prayoga. And when you want to make bhave prayoga, you are going to put Krishna word into tritiya. This kriya pada will be declined as atmani padam. Like here you used to do, like same thing, only you are not going to use karma padam. That's it in bhave. For example, Ramaha hasati. Hasati is a kind of bhava. You cannot use karma padam along with hasati kriya padam. Never. You are not going to. You can say uchchaihi hasati, nichchaihi hasati, but that is not karma. Right? So you can make that sentence into kartari prayoga, Ramaha hasati. But if you want to make into, we cannot say it is bhave, what passive voice, what word we can use for bhave? Bhava pradhana prayoga. Okay. Emotion prayoga. Emotions will say. इमोशंस ठीक है, लेकिन प्रयोग को कोई क्या नाम देंगे? जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके लिए क्या होगा? शायद देखना पड़ेगा, हो भी सकता है कहीं, है ना? समझ लेते हैं कर्मणि में अंतर और भावे में क्या अंतर रहेगा. कर्मणि में हमेशा कर्म प्रधान रहेगा, कर्म आएगा ही आएगा. भावे में कभी भी कर्म नहीं आएगा.
भावे प्रयोग किसके साथ होता है? जो धातु अकर्मक है उनके साथ ही भावे प्रयोग होगा। तो ऐसे अकर्मक धातु कितने हैं? तो यहाँ 13 ऐसे शब्द दिए हैं, लज्जा, लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय। इन अर्थों में आने वाले जितने भी क्रियापद रहेंगे वो सारे के सारे क्रियापद क्या हो जाएंगे? अकर्मक हो जाएंगे। लक्ष्यते, क्रीडति, इसके साथ आप कर्म नहीं यूज कर सकते, मतलब इनका आप कर्तव्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, भावे में भी कर सकते हैं। कर्तव्य में इनका प्रयोग कभी भी नहीं होगा। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ। वर्धते, वृद्धि मतलब क्या? वर्धते। अभी वर्धते क्रियापद आप कर्मणि में करेंगे तो सॉरी कर्तव्य में इसको यूज करेंगे तो वृक्ष वर्धते मतलब क्या? वृक्ष बढ़ता है। तो यदि मुझे यही सेम सेंटेंस भावे में करना है तो कैसे होगा? वृक्षेण वर्ध्यते वृक्षेण वृक्षेण वर्ध्यते। वृक्षेण वर्ध्यते। तो इसमें प्रथम क्रियापद में हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन रहेगा। आप बाकी के वचन भी इसमें नहीं देखेंगे। हमेशा हमेशा के लिए वहां प्रथम पुरुष ही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए वहां एक वचन ही रहेगा। भले कर्ता आप बहुत यूज कर सकते हो, रामेण हस्यते, ठीक है। अब बालक ही बहुवचन भी यूज कर सकते कर्ता में, ही हस्यते, बहुत सारे बालकों से हंसा जाता है, ऐसा उसका। वृक्षः वर्धते, वृक्षेण वर्धते। रामः लज्जते, रामेण लज्जते। यह चाहिए। So I just want to clarify that the Kriya Pada will be always in Prathama Purusha Ekavachana. Even if the Karta is in plural or dual form. Because it doesn't matter, right? Karta, you can put many karta. This is just a kriya. It can be done by one or many. It doesn't matter. Ramena, ekakina Ramena hasyate. If there is only one Ram and if he is laughing, then we say Ramena hasyate. And if there are many people, we can say balakaihi, janaihi hasyate. Ramaihi hasyate. If there are many Rams, we can say Ramaihi hasyate. Jagaranam, sthiti, satta. Satta means what? विद्युते धातु, अस्ति धातु, भू धातु, these are सत्तार्थक धातु. Means what? To be. अस्ति means to be. रामः अस्ति. If you are going to make प्रयोग of अस् धातु, it becomes भूयते. रामेण अत्र भूयते. Ram stays here. रामः अत्र अस्ति, रामेण अत्र भूयते. रामः अत्र भवति, रामेण अत्र भूयते. Okay, another dhatu, mriyate. Mriyate already it is atmanepadi dhatu, so it will form will look similar. So okay. क्रीडकाः क्रीडन्ति, क्रीडकाः क्रीडन्ति, क्रीडकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति. सेम सेंटेंस इनटू भावे, कन्दुकेन क्रीड्यते, क्रीड्यते. Isn't it? Is it clear or? Yeah. So it's like वृक्षः कंपति, वृक्षेण कंप्यते. Compyate, correct. Compyate. These are some dhatus you see. लज्जार्थक लज्जते, जिह्रेति, वृद्ध्यति. These are लज्जार्थक धातु. सत्तार्थक अस्ति, भवति, वर्तते, विद्यते. Some kind of state of being like तिष्ठति, उपविशति. That is kind of स्थिति. कासते. जागरणम is जागरति. There are some, right? वृद्धिः वर्धते, प्रचीयते, क्षीयते, क्षीर्यते, ध्वंसते अथवा ध्वंसति. जिन्वति, जिन्वति, there is another क्रियापद जिन्वति अथवा जीवति.
जीवित जीवितम जीवति. I can use जीवति also. मरणं प्राणत्यागे म्रियते उद्वयति इति अर्थः. शयनं शेते स्वपिति निद्राति क्रीडति क्रीडति कूर्दते रुचिः रोचते लिप्यति राजते भाति काशते लसति. These are some dhatus. These all dhatus are akarmak dhatu in transitive verb. Is rodati is akarmak or sakarmak? Rochate, one you are saying about Like rudanam karoti. rodate. Rod, ha. Roda dhatu, you cannot use any kriya pada, any karma, right? Balak roditi. Instead of karma padam you would add to that. You are not able to add. You can't because it is akarmak dhatu. Roditi. So रोना हंसना ये क्रिया भाववाचक है, तो हमेशा अकर्मक रहेगी. उठता है बैठता है, इसमें स्थिति दिखाई देती है, उठना बैठना. से आसंदम उपविशति से आसन अधिकरण. यू कैन नॉट यूज एनी कर्म अलोंग विथ उपविशति और तिष्ठति धातु. रामः तिष्ठति. ट्राई करो, कुछ कर्म यूज कर सकते हो क्या? उसके साथ कोई कर्म नहीं आने वाला. तिष्ठति धातु के साथ कर्म धातु है. ये सारे धातु आप भावे प्रयोग में यूज करेंगे तो वहां लज्जते ऐसा, ये एक्चुअली मूल आत्मनेपदी धातु है, उसमें कर्मणि या भावे प्रयोग जब करेंगे वहां यकार लगाएंगे. ते इते अंते के पहले यकार लगाएंगे. लज्जते ऐसे वाला रूप बनेगा. बहुत सारे इनके मैं कर्मणि रूप भी आपको लिख करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा यदि जरूरत है तो. ठीक है. अभी ये जो यकार आता है वो ल्यप प्रत्यय का नहीं आता है, जस्ट यकार ल्यप प्रत्यय आ जाएगा. ये प्रत्यय एक स्वतंत्र प्रत्यय, इसका यहाँ कुछ संबंध नहीं. ये प्रत्यय है, यहाँ संबंध नहीं. So in the bhave prayoga, you just have to add like a pachati, pachyate, like that. Form will be same as karmani. Correct? Okay. Pachati is sakarmak dhatu. If you are changing into karmani, it would be pachyate. Similarly, all dhatus, if you want to make into bhave, structure would be same. But what is the rule in bhave prayoga? If you are using particular kriya pada, that kriya pada you will be putting into atmanepada. That is first thing, and it would be only in prathama purusha and ekavachanam. That is. So all that dhatus you showed are the only dhatus which are used in the bhave prayoga. Yes. Those dhatus will be used into kartari prayoga as well as bhave prayoga, not in karmani. So त्रिषु वचनेषु like एकवचन क्रियापद, like तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो क्रियापद है वो एक ही वचन में रहेगा. जब यूज करेंगे तो उनके सारे आप वचन यूज कर सकते हो. जैसे कि वृक्षः वर्धते, आत्मनेपदी है, तो वहां यदि कर्तरी में सेंटेंस बना रहे हो तो वृक्षः वर्धते, वृक्षाः वर्धन्ते, अहम वर्धे ऐसा. लेकिन भावे में क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष का एक वचन ही आप यूज करेंगे. वृक्षेण वर्ध्यते, मया वर्ध्यते, एक ही फॉर्म रहेगा. ओके. ठीक है. तो भावे प्रयोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसा हासना दिखाना है, स्थिति दिखानी है, एक्चुअली भाववाचक को यूज भी करना है, अकर्म क्रियापद को यूज भी करना है, तो सिंपल तरीका है कर्तरी वाला सेंटेंस बनाओ. डिफिकल्ट आपको लग रहा है तो सादा सादा उसका सकर्मक कर्म कर्तरी में प्रयोग कर दो. वृक्षः वर्धते ऐसा पूछने की जरूरत नहीं कि वृक्ष से बढ़ा जाता है.
वो डिफिकल्ट लगता है, जरा सुनने को भी विचित्र ही लगता है, लेकिन होता है ऐसा प्रयोग, इसलिए मैंने बताया, किसी ने पूछा था इसलिए इतना सारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। कारक प्रकरण का आरंभ किया था। कारक किसको बोलते हैं? Oh, I just want to ask one question, sorry. So the dhatu list are the only dhatus you are used in the bhave prayoga, no other dhatus are. No, no, no. What I said, if लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, इतने जो 13 शब्द है ना, इन अर्थों में आने वाले जितने भी क्रियापद हैं, बहुत सारे क्रियापद सिमिलर रह सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ उदाहरण रखे, जैसे कि क्रीड़ा अर्थ में क्रीडति है, कुर्दते है, और भी क्रीडार्थक बहुत सारे, दिव्यति ऐसा एक क्रियापद आता है। दिव्य मतलब जो अक्षों से खेलते हैं ना, उस क्रिया को बोलते हैं दिव्यति, वो भी क्रीड़ा है, तो वो धातु भी आकर्मक रहेगा। ये मेन है, मेन शब्द है। इन अर्थों में यदि कोई धातु आ जाता है वो आकर्मक कहलाता है। मैंने मतलब इकट्ठा कर करके उदाहरण के तौर पे मैंने दो चार ऐसे रखे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं और है। इन अर्थों में यदि आता है तो उसको अकर्मक कहना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? हाँ, now we'll do summary of our कारक प्रकरणम। कारकान्वयी क्रियान्वयी कारकम, जो क्रिया से अन्वित है, मतलब जिसका कनेक्शन क्रियापद के साथ है, उसको हम कारक बोलते हैं। ऐसे कनेक्शन रखने वाले कितने हैं कारक? तो 6 कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक। उसके लिए एक फेमस वाक्य जाते जाते मैं बता देता हूँ। राम पंपावर गेलाय तो बरं। आपको कुछ पूछना है तो पूछिएगा, नहीं तो म्यूट करते रखिए। राम ददाति, राम देता है। नाउ ददाति इज क्रिया, राम इज कनेक्टेड विथ ददाति क्रिया, दान क्रिया। राम किम ददाति इति आकांक्षाशित गाम ददाति। नाउ दिस गाम शब्द इज आल्सो कनेक्टेड विथ ददाति। किम ददाति? गाम ददाति। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन काउ एंड दान क्रिया। अस्तु, केन साधनेन ददाति इति प्रश्नश्चेत् हस्तेन ददाति। अगेन देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन हस्त एंड ददाति क्रिया। कस्मै ददाति इति प्रश्नश्चेत् ब्राह्मणाय ददाति। So now there is a connection between dadati kriya plus brahmana. That's why that becomes sampradana karakam. Apadana karakam. Dadati. Kutah dadati athva kasmat dadati. Kasmat sthanat dadati. Goshthat. Now there is a connection. Goshtha and dadati kriya is connected. Kasmat dadati. Goshthat dadati. And kasmin dadati. Kasmin sthane dadati iti prashnashchet. गंगा तीरे ददाति, अयोध्या शरयू नद्याः तीरे ददाति। नाउ इफ आई यूज कस्य ददाति, तो कस्य और ददाति, इसके बीच में आप वाक्य बना सकते हो। कस्य, इसके साथ आप संबंध दिखा सकते हो। रामस्य, क्षम्यता, दशरथस्य पुत्रः, वहां दशरथ जी का और राम जी का कनेक्शन आप दिखा सकते हो, लेकिन कस्य इस पद से दशरथस्य ददाति ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, बीच में राम आपको ले आना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता, उसको हम कारक नहीं बोलते। तो ऐसे कहने से कितने कारक है हमारे पास? सिर्फ 6 कारक हैं। षष्ठी विभक्ति है, उस विभक्ति का यूज हम संबंध दिखाने के लिए करते हैं। संबंध ये कारक नहीं है। ठीक है, ये हो गए 6 कारक। उसके बाद हमने हर एक विभक्ति के कुछ पॉइंट्स देखे, कहाँ कौन सी विभक्ति किस किस शब्द के साथ किस किस अर्थ में यूज होती है, वो सारे विभक्ति के अर्थस देखे। यदि कुछ उपपद आते हैं जैसे कि सह, नमः, उनके साथ भी
पर्टिकुलर विभक्ति यूज होती, जैसे कि नमः के साथ हमेशा क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। दक्षिणतः, वामतः, पुरतः, पृष्ठतः के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति होगी। हाँ, किसी यदि क्रियापद आप यूज कर रहे हो, जैसे कि नमः हो गया, सह, सह ये उपपद यूज कर रहे हो तो सह के साथ हमेशा आप क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति करेंगे। अभितः, परितः, दोनों ओर, सारे ओर, ऐसे शब्द यदि यूज कर रहे हो तो उसके साथ हमेशा द्वितीया विभक्ति रहेगी। ऐसे कुछ उपपद विभक्ति भी हमने पढ़े, तो इनका ज्यादा से ज्यादा जितना वाक्य में यूज हो सके करिएगा। और बस इतना ही कहना चाहूंगा, टच में रहिएगा और बहुत सारा हमें करना है ग्रामर का, है कि नहीं। ओके, विल कंक्लूड हियर विथ शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यदत्र सौष्ठवं किंचित् तद्गुरोर्मे कदा कदा पुनर्मिलामः? शीघ्रमेव मेलिष्यामः। अधुना तु अवकाशकालः भविष्यति। अवकाशात् यदा पुनः आरप्स्यते विद्यालयः तदा निश्चयेन मेलिष्यामः। प्रत्यय समास विचारादिकं वयं कुर्मः। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, धन्यवादः महोदय। धन्यवाद। धन्यवादः गुरुजी।